गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। इसको हमने अभी सैटरडे को भी कवर किया था, बट अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 2016 में जब अप्रूवल दिया था लीगो इंडिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने उसके 7 साल बाद अब जो है इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और ये महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? इंडिया की लार्जेस्ट साइंटिफिक फैसिलिटी होगी जो कि यूनिवर्स को जो है वो डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू डिटेक्ट करके देखेगी, ऑब्जर्व करेगी। तो ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या हैं? तो बेसिकली ये स्पेस टाइम में जो रिपल्स हमारे जो हैं चल रहे हैं लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज़ के, जिससे कि स्टार्स प्लैनेट्स जो हैं मूव हो रही हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम ये ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी जो है इसको 100 साल पहले पॉस्टुलेट किया था। लेकिन 2015 में जो है जो टू लीगो एक्सपेरिमेंट्स लगाए गए हैं, टू लीगो ऑब्जर्वेटरीज लगाई गई हैं यूएस में। 2015 में ये ग्रेविटेशनल वेव्स का जो है वो डिटेक्ट हुई। तो लगभग अभी तक 10 बार लगभग जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया जा चुका है। तो ये लीगो है क्या? इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगा। दो ऑब्जर्वेटरीज जो हैं वो यूएस में लगाई गई हैं, बाकी जो है यूरोप और जापान में भी लगाई जा रही हैं। इंडिया की जो लीगो ऑब्जर्वेटरी होगी वो फिफ्थ होगी वर्ल्ड में। अब जो इंडिया वाली ऑब्जर्वेटरी है वो यूएस की जो दो ऑब्जर्वेटरीज हैं उसी की तरह होगी, सिमिलर होगी। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है वो नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएस के साथ एक एमओयू साइन करके इसको बनाने का प्लान किया है। और हिंगोली डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र का, वहाँ पर इसको बनाया जाएगा और 2030 से ये काम करना शुरू कर देगी। 2600 करोड़ रुपए जो है वो इसके ऊपर जो है वो लगाए जाएंगे इस फैसिलिटी को बनाने के लिए। और ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑफ कोर्स साइंटिफिक फैसिलिटी होने वाली है। अब ये फिफ्थ लीगो ऑब्जर्वेटरी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब आप देखो, 2015 से लेके अभी तक सिर्फ 10 बार जो है इसको ऑब्जर्व किया गया है ग्रेविटेशनल वेव्स को। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम होती है ग्रेविटेशनल वेव्स की, तो इनकी डिटेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है नेटवर्क ऑफ ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज हमको एक्सपैंड करना पड़ेगा ग्लोबली, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज कवच। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अंडमान और निकोबार कमांड की जो है उन्होंने रिसेंटली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच जो है वो कंडक्ट की है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने जो है पार्टिसिपेट किया है। अभी एक्सरसाइज कवच जो है इसको में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के असट्स ने पार्टिसिपेशन किया और ऑपरेशनल सिनर्जी और जॉइंट फॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ जो है उसको एनहेंस करने के लिए इसको किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रैकून स्टीलर। ये भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने बताया है कि रैकून स्टीलर्स का इस्तेमाल किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज़ को टारगेट करने के लिए। तो रैकून स्टीलर है क्या? एक मैलवेयर है ये, जिसमें कि डेटा जो है जिससे चुराया जाता है कंप्यूटर को इन्फेक्ट करके। कुकीज़, लॉगिन डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इन सबको टारगेट किया जाता है ब्राउज़र्स में। तो कई बार तो क्या होता है कि ये ईमेल के थ्रू जो है आपके उसमें सिस्टम में जो है वो डाला जाता है और सेंसिटिव जो डेटा है वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, और ये रैकून स्टीलर्स जो होते हैं ये ऐसे मैलवेयर होता है जिसको कोई भी परचेज कर सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर स्कीम। ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया है कि वो एक स्पेशल स्कीम निकालेंगे जिसमें कि उन पुअर पीपल को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा जो भी अंडर ट्रायल्स हैं और वो पेनल्टी या फिर बेल अमाउंट जो है वो अपनी जेब से नहीं दे पा रहे, उसकी वजह से उनको जेल में रहना पड़ रहा है। तो जो ऐसे प्रिजनर्स हैं उनको जो है वो बाहर आने का मौका मिलेगा और हमारी प्रिजन्स भी डीकंजेस्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए होगा क्या कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो पैसा दिया जाएगा और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हुए इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और इनको बेनिफिट्स जो हैं पूरे प्रिजनर्स को पहुंचाए जाएंगे। ई प्रिजन्स प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। सेंसिटाइजेशन भी की जाएगी सारे स्टेक होल्डर्स की, ताकि जो है पुअर प्रिजनर्स को ये लीगल एड भी जो है वो दी जा सके। अब इंडिया में ये अंडर ट्रायल जो है इसकी जो शेयर है क्यों बढ़ता जा रहा है? एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से लगभग 1% जो इंडिया में प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। 22.2% जो है वो कन्विक्ट किए गए हैं बाय कोर्ट ऑफ लॉ। वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ के मुताबिक इंडिया में 6th हाईएस्ट शेयर ऑफ प्री ट्रायल डिटेनीज है। और ये प्रॉब्लम कोई नवी नहीं है, 1975 से ये प्रॉब्लम है और ये परसिस्ट करती आ रही है। इंडिया में जो है जुडिशल प्रोसेस बहुत ही स्लो है, तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से जो है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो बहुत ही स्लो मूव होती हैं। और जो है अगर हो भी जाती हैं मूव तो बहुत से इनमेट्स जो हैं वो बेल बॉन्ड्स या पेनल्टी दे ही नहीं पाते, तो उनको जेल में रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टिक बॉर्न एंसेफेलाइटिस। ये भी टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है।
यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया है कि 3 केसेस ऑफ टिक बॉर्न एंसेफेलाइटिस उनको यूके में सिंस 2019 देखने को मिल रहे हैं। ये एक वायरस के थ्रू किए होते हैं, और टिक बॉर्न एंसेफेलाइटिस एक बेसिकली वायरस के थ्रू होता है। और ये जो जनरली लोग रॉ मिल्क पी लेते हैं, या कोई डेयरी प्रोडक्ट जो है गोट, शीप या काऊ के मिल्क का जो है बना हुआ जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि चीज़, तो उससे जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है वायरस। इसमें माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस भी हो सकती है, लेकिन कई लोगों में सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकती है। खासकर ये जो आपकी टिक बॉर्न एंसेफेलाइटिस है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, नॉर्दर्न चाइना, मंगोलिया और रशियन फेडरेशन के जो एरिया है वहाँ पर ये पाया जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 7 से 14 दिन का होता है, और 2 वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड, और इसके थ्रू बचा जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रोंगाली बिहू। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रोंगाली बिहू जो है वो असम गवर्नमेंट ने जो है वो सेलिब्रेट करने का एक डिसीजन लिया हुआ है। ये वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ असम है। इसको बोहाग बिहू भी कहते हैं। इस बिहू में जो है वो असम का न्यू ईयर जो है वो एक तरह से आ जाता है, और स्प्रिंग सीजन जो है वो शुरू हो जाता है। तो रोंग का मतलब होता है हैप्पीनेस और सेलिब्रेशंस, ठीक है। तो इसमें इस टाइम पर जो है इस सेलिब्रेशन में जो है विमेन खासकर जो है वो मुगा सिल्क या कॉटन मेखेला जो है वो क्लॉथ पहनती हैं, और ये एक तरह से बेसिकली अटायर होता है उनका। बिहू जो है वहाँ का एक सेकुलर फेस्टिवल है, सारे जो है धर्म के लोग असम में मनाते हैं। जो सबसे पहला बिहू होता है वो आपका यही बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू होता है, जो अप्रैल में होता है। सेकंड बिहू जो है वो काती बिहू या कोंगाली बिहू होता है, ये अक्टूबर में होता है। जो लास्ट होता है वो आपका जनवरी में आता है, जिसको हम माघ बिहू कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग पोल्यूशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा ने हाई रेजोल्यूशन एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट टेम्पो, जिसका नाम रखा गया है, उसको लॉन्च कर दिया है स्पेस एक्स का रॉकेट यूज़ करते हुए। तो ये नॉर्थ अमेरिका में जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको मॉनिटर करेगा, जैसे कि ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड। और ये नॉर्थ अमेरिका को हर घंटे में जो है वो अपडेट देगा एयर क्वालिटी की मेजरमेंट करके। इसको लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो रखा जाएगा। और नासा जो है वो पहली ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने ये ऐसा एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया। इससे पहले साउथ कोरिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी अपना जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मिशन इन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, या फिर NMICPS। ये टॉपिक भी आपके जो है वो साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपर्ट्स डिलिब्रेट कर रहे हैं कि कैसे नेशनल इस NMICPS मिशन को जो है वो हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये मिशन है क्या, 2018 में इसको लॉन्च किया गया। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को जो है वो एड्रेस करने का ये कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है। इसमें 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, स्किल एनहेंसमेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप डेवलपमेंट जो है जो आपकी जो है एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज़ में उनको स्ट्रेंथन करना, ये सारा इसका जो है वो मिशन है ये। अब साइबर फिजिकल सिस्टम्स क्या होते हैं? ये बेसिकली जो आपके डिजिटल और जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक तरह से कंबाइन करते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, ऑटोनोमस व्हीकल्स, जो है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें हम साइबर फिजिकल सिस्टम्स में डालते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या कि बहुत सारे सेंसर्स का इस्तेमाल होगा, कम्युनिकेशन चलेगा आपस में, और कंट्रोल होगा, इंटरकनेक्टेड होंगे बहुत सारे जो है वो एलिमेंट्स, जो फिजिकल एलिमेंट्स, उसके बेसिस पर जो है ये वर्क करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जूस मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो अपने जूस मिशन को जो है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन को जो है वो लॉन्च करने वाली है। और ये जुपिटर में और जुपिटर के 3 बिगेस्ट मून्स में जो है वो जाएगा ये मिशन। जुपिटर के 3 बिगेस्ट मून्स कौन से हैं? यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमाइड। तो गैनीमाइड जो है सबसे बड़ा मून है, और जब 4 साल बाद ये मिशन पहुंचेगा तो जो गैनीमीड है, जो जुपिटर का सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट मून है, उसके आस ऑर्बिट में जो है ये घूमने लगेगा, ठीक है। लगभग 8 साल जो है वो उसको जुपिटर में पहुंचने में लग जाएंगे। और ये एक्सप्लोर करने जा रहा है कि क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, और जुपिटर का ओरिजिन कैसे हुआ था उसको ये ऑब्जर्व करने जा रहा है। ये पहला ऐसा मिशन बनेगा जो ऑफ कोर्स अर्थ के मून के अलावा किसी और प्लैनेट के मून पर जाएगा।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैसियोपिया ए। ये टॉपिक भी आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैसियोपिया ए जो है मैसिव स्टार को जो है वो कैप्चर किया है। लगभग 350 साल पहले ये एक्सप्लोड हो चुका है। इसके जो रेमिनेंट बचे हैं उसको जो है ऑब्जर्व किया गया है। लगभग 11,000 लाइट ईयर्स अवे है ये कॉन्स्टलेशन कैसियोपिया में। तो अब ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, उसके वजह से ये मैसिव स्टार जो है अब जा चुका है। तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते क्या हैं? सुपरनोवा का एक्सप्लोजन का मतलब क्या हुआ कि एक स्टार का एक्सप्लोजन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि लार्जेस्ट एक्सप्लोजन होता है जो कि स्पेस में अभी तक ऑब्जर्व किया गया है। अब दो वजह से ये हो सकता है सुपरनोवा का एक्सप्लोजन। या तो बाइनरी स्टार्स, मतलब दो स्टार्स जो एक ही पॉइंट को ऑर्बिट कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जो वाइट वाला डॉर्क स्टार है वो जो है अपने कंपेनियन स्टार का जो है वो सारा मैटर खींचता रहेगा, इंक्लूडिंग जो है कार्बन, जो 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 ऑफ कोर्स कार्बन ऑक्सीजन से जो बना है वाइट डॉर्फ, वो आपके दूसरे स्टार का जो है वो मैटर खींचता रहेगा। फिर जो ये वाइट डॉर्फ स्टार है वो इतना ज़्यादा मैटर खींच लेगा कि वो इतना भारी हो जाएगा और फिर वो एक्सप्लोड हो जाता है। उसकी वजह से जो है वो सुपरनोवा होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब एक स्टार जो है वो इतना मैसिव होता है, उसकी जो न्यूक्लियर फ्यूल है जब वो ख़त्म हो जाता है, तो जो उसका कोर है, जो उसका ऑफ कोर्स जो उसका मैटर है वो कोर के ऊपर गिरने लगता है। और जब वो कोर जो है वो इतना हैवी हो जाता है कि वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को ही जब विथस्टैंड नहीं कर पाता, तो जायंट एक्सप्लोजन होता है और उसकी वजह से भी ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हम देख पाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीर कैट टेलीस्कोप, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए साउथ अफ्रीका के मीर कैट टेलीस्कोप में से जो है वो डेटा माइन किया है। तो साउथ अफ्रीका के नॉर्थ नदन के प्रोविंस में ये जो है मीर कैट टेलीस्कोप लगाया गया है। और ये 64 इंटरलिंक्ड इसमें रिसेप्टर्स लगे हैं। रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए ये एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स को जो है वो स्टडी कर रहा है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक कोडिंग फ्रेमवर्क का यूज़ किया जिसको हम एस्ट्रोनॉमली कहते हैं। और ये पाया कि ऑड, उन्होंने जो डेटा है वो ऑड रेडियो सर्कल्स में पाया। ऑड रेडियो सर्कल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली ये बहुत ही बड़े मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सर्कुलर होते हैं और ब्राइट होते हैं, और ये रेडियो के वेवलेंथ्स में के एजिस पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है उन्होंने डेटा उसका इकट्ठा किया है और उसको जो है वो डेसिफर किया जा रहा है। अब मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया, तो मशीन लर्निंग भी देख लेते हैं। मशीन लर्निंग जो है ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें डेटा और एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हुए जो है वो हम ऐसा जो है वो कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इवन हम मशीन्स को भी समझा सकते हैं कि कैसे ह्यूमंस जो है वो लर्न करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मियावाकी मेथड। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीएमसी जो है मुंबई की, वो मियावाकी फॉरेस्ट का टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देवनगर विलेज में जो है वो एफॉरेस्टेशन कर रही है। तो ये ऑफ कोर्स मियावाकी मेथड जो है वो एफॉरेस्टेशन का एक मेथड है जो कि जापानीज़ बॉटनिस्ट जो हैं प्रोफेसर अकीरा मियावाकी, उन्होंने डेवलप किया है। इसमें जो है 2 से 4 जो है वो इंडिजिनस ट्रीज़ लगाए जाते हैं विद इन एवरी स्क्वायर मीटर। और ये ट्रीज़ जो हैं वो कुछ टाइम बाद सेल्फ सस्टेनेबल हो जाते हैं और अपनी फुल लेंथ में ग्रो हो जाते हैं विद इन 3 ईयर्स। मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक से आप नॉर्मल जो फॉरेस्ट है जितनी उसकी स्पीड होती है उससे 10 टाइम्स तेज़ी से आप जो है फॉरेस्ट को उगा सकते हो। 30 गुना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट उगेगा और 100 टाइम्स मोर बायोडाइवर्सिटी उस फॉरेस्ट में होगी। तो ये ऑफ कोर्स आफ्टर सर्टेन पीरियड, लगभग 2 से 3 साल के बाद ये पूरा जो है वो मेथड मेंटेनेंस फ्री हो जाता है और ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी भी इंप्रूव हो जाती है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी हो जाती है, ग्रीन कवर भी इंक्रीज हो जाता है, और एयर पोल्यूशन कम करना, वाटर टेबल को जो है वो प्रिजर्व करके रखना, ये सारे आपके जो हैं गोल्स वो हैं वो अचीव हो जाते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is LEGO India project. This topic is important for your science and tech section. So we discussed this topic on Saturday also, but now we will see it in a little detail. So since 2016, when this LEGO India project was given the approval by government, it is now finally the time for and the Union Cabinet has also given it approval, and the project is going to be constructed at Maharashtra, and the project will be constructed by the year 2030. So it will be, of course, observing the gravitational waves. So what are these gravitational waves? So these are basically the ripples in space-time which are produced by the movement of large celestial bodies like even your planets and stars. So
100 years ago, Albert Einstein's general theory of relativity said that this gravitation works through waves, but at that time, people were not ready to accept it. So it took almost 115 years, I'm sorry, 100 years for these LIGO observatories in the US to discover them. So it in 2015, the first time gravitational waves were detected, and since then till now only 10 such events have been identified, or 10 such events have occurred when we have been able to detect these gravitational waves. So you can see that it is extremely rare phenomena. It is extremely low in strength, so that's why they are very difficult to be tracked or detected. So what is LIGO? So Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory is an international network of laboratories which are meant to detect gravitational waves. So under this, two large observatories have been made in US, and the other ones are already working in Europe and Japan also. So LIGO India Observatory will be the fifth, and this will be the final node of the planned network. So what is LIGO India? It is a planned advanced gravitational wave observatory which received in principle approval of the government in 2016, and this would be similar to the ones that are located in US. And that's why, of course, the Department of Science and Technology has signed an MOU with National Science Foundation of US to have this observatory in India. So it will be located in Hingoli district of Maharashtra, and this will be completed by 2030. About 2600 crore rupees budget would be required for it, because it will be the largest scientific experiment in India. So, what is the need of this fifth LIGO observatory when there are already four such observatories in the world? So, of course, like I've told you, that till now only 10 such events have occurred when we have been able to detect these gravitational waves. So that's why it is a extremely low, because of extremely low strength of gravitational waves, this detection becomes very difficult. So we have to expand the network of gravitational wave observatories around the globe, so that we can improve the accuracy and quality of information which can be taken from these gravitational waves detection. So the next topic is exercise Kavach. This topic is important for your science and tech section. So Andaman and Nicobar Command has recently conducted a joint military exercise called Kavach, which involves the assets of Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, and Indian Coast Guard. And this has been conducted under the aegis of Andaman and Nicobar Command, which is of course the only joint forces command in our country, or the only theater command in our country. So of course the aim of this exercise was to increase operational synergy and joint warfighting capabilities. So the next topic is raccoon stealer. This topic is again important for your security section. So an information stealing malware has been delivered through the email to target 8 central government entities, which is known as the raccoon stealer. This has been informed by an intelligence agency recently. So what are these raccoon stealers? These are the malwares which are designed to steal data from infected computer, like cookies, saved login details, saved credit card details, etc. So once this sensitive data is taken away by the cyber criminals, they use it to conduct harmful activities, of course. And like most information stealers, these raccoon stealer also is this raccoon stealer is also purchasable. So the next topic is support for poor prisoner scheme. This topic is important for your social issues. Ministry of Home Affairs has decided to launch a special scheme to provide financial support to those poor people who are suffering in jails because they are unable to afford the penalty or bail amount. So this will allow the poor prisoners to get out of the prison, and of course this will also help us to decongest our prisons. So under this scheme, financial support will be given to states so that this relief can be extended to these poor prisoners. And apart from that, not just this, technology driven solutions will be put in place so that benefits can reach the poor prisoners. Apart from identifying the beneficiaries through e-prisons platform, district legal services authority will also be strengthened, and sensitization and capacity building of all stakeholders will also be done, so that the quality legal aid can be made available to these needy poor prisoners. So what is the issue here? Why the share of under trials are increasing in India? So of course, as per the NCRB data,
1% in prisoners in India at the end of 2021 were under trials, and 22.2% of them were convicted by a court of law. So, as per the World Prison Brief, India currently has the sixth highest share of pre-trial detainees, and this problem is not new. This has been persisting since 1975. So, because of the inordinate delay in judicial processes, this problem is occurring. So, certain times it has also been observed that the poor prisoners are unable to afford the bail bonds, and they end up languishing in prisons even when they could be out just by paying the bail amount. So the next topic is tick-borne encephalitis. This topic is important for your social issues. So recently, as per an official statement by UK Health Security Agency, 3 cases of probable or confirmed tick-borne encephalitis have been witnessed since 2019 in England. So this is a virus, and it spreads from people. It spreads to people from eating or drinking raw milk or cheese from infected goats, sheep, or cows. It has mild flu-like illness, but it can also be converted into severe infection of the central nervous system. But generally, this disease is confined to the eastern, central, northern, and western European countries, northern China, Mongolia, and Russian Federation. Generally, people do not observe any signs, but of course, during this incubation period of 7 to 14 days, people generally feel better after that. There are two vaccines already available to treat the same. So the next topic is Rongali Bihu. This topic is important for your art and culture section. On the eve of Rongali Bihu, Assam government has planned a spectacle around the folk dance, and certain artists from all districts of state will perform together at Guwahati's Sarusajai Stadium. This is a festival of Assam. It is commonly known as Bohag Bihu. It marks the onset of Assamese New Year and the coming of spring also. It means happiness and celebrations. So generally on this occasion, traditional pat or muga silk or cotton mekhela chadars are worn by ladies, and Bihu is basically a secular festival. There are three bihus. First, of course, is this Bohag Bihu or Rangali Bihu, which is celebrated in the month of April. Second one is the Kati Bihu or Kongali Bihu, which is celebrated in the month of October. And the final one, of course, is the Magh Bihu, which is observed during the month of January. So the next topic is tropospheric emissions monitoring pollution, or TEMPO. This topic is important for your science and tech section. So NASA's high resolution air pollution monitoring instrument TEMPO has been launched from the SpaceX rocket. This will monitor all major air pollutants across North America, like ozone, nitrogen oxide, sulfur dioxide, formaldehyde levels, etc. And this will give the hourly reports to over from the North American continent. So this will be placed in the low Earth orbit, and NASA is not the first such agency to have launched such an instrument which will be monitoring the air pollution. South Korea and European Space Agency have already done the same. So the next topic is NMICPS, or the National Mission in Interdisciplinary Cyber Physical Systems. This topic is important for your science and tech section. Experts have been deliberating on ways to strengthen this mission, which was launched in 2018, and the aim is to address the technological development in the country through 25 technology innovation hubs, which are planned across the country. Department of Science and Technology is implementing this scheme. So what are these cyber physical systems? So basically the combination of digital and physical objects, like autonomous vehicles, machines. So these two things, they connect with each other. They basically talk to each other using sensors, or they are interconnected with each other using computer network and data analytics. So this is what cyber physical system is. So to develop these technologies in India, this NMICPS mission was launched in 2018. Okay, so the next topic is JUICE mission. This topic is again important for your science and tech section. So European Space Agency is in the final phase of launching this much awaited JUICE mission, that is the Jupiter Icy Moon Explorer mission, to explore Jupiter and three of its biggest moons. So Europa, Callisto, and Ganymede are the three moons of Jupiter, and the aim of this mission is to explore the possibility of life in space and the origin of Jupiter. So it will take about 8 years to reach Jupiter, but after 4 years it will arrive at Ganymede, which is the largest moon of Jupiter, and this is the first such mission to orbit a planetary moon which is other than the Earth's moon.
So the next topic is Cassiopeia A. This topic is again important for your science and tech section. So NASA's James Webb Space Telescope has recently captured never before seen details of Cassiopeia A, which is a massive star or the remnant of a massive star which exploded about 340 years ago. So it is the youngest remnant of a massive star in our galaxy. It is about 11,000 light years away in the constellation of Cassiopeia. So it has undergone supernova explosion, which is of course which means explosion of a star. So there are two kinds of there are two reasons why a star explodes. First, of course, is the reason when there are two stars or the binary stars, and one star, that is the white dwarf star, starts stealing matter from its companion star, and eventually when it becomes too heavy, it explodes. And the second method is or the second type is when a star runs out of nuclear fuel, its mass starts flowing into the core. Eventually the core becomes so heavy that a giant explosion occurs of a supernova. So the next topic is Meerkat telescope. This topic is again important for your science and tech section. So astronomers have used machine learning to mine data from South Africa's Meerkat telescope. So this telescope is situated in South Africa's Northern Cape province, and it is originally known as the Karoo Array telescope. So at present it is having an array of 64 interlinked receptors, and it uses radio signals from the space to study the evolution of universe. So astronomers have used a coding framework called astronomy and found this odd radio circles. So what are these odd radio circles? Basically, they are very large mysterious objects which are highly circular and bright, and they occur along the edges of radio wavelengths. So to observe these odd radio circles, machine learning tools have been used. So machine learning is basically a branch of artificial intelligence which focuses on the use of data and algorithm to imitate the way humans learn. So the next topic is Miyawaki method. This topic is again important for your environment section. So to tackle climate change and pollution, BMC has recently started creating a Miyawaki forest at Deonar village in Govandi. So this technique is basically a method of afforestation, which has been developed by a Japanese botanist and plant ecology expert called Professor Akira Miyawaki. This technique involves planting 2 to 4 types of indigenous trees within every square meter, and under this method, trees would slowly become self-sustainable and they will grow to their full length within 3 years. So this Miyawaki forest, as compared to traditional techniques, or as compared to the forest grown under traditional techniques, Miyawaki forests would grow 10 times faster, 30 times denser, and 100 times they will contain 100 times more biodiversity than traditional forests. So they are very quick to establish. They are maintenance free after first 2 to 3 years, and this will help us to improve biodiversity, sequester carbon, increase green cover, lower air pollution, and preserve the water table. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.